Hello and a very warm welcome. Thanks for tuning into News9 Live. I'm Kabir Naqvi and you're watching a News9 Live special series called Who Stole My Dream Home? Today focusing on the aspect of why no one seems to be bothered. Buying a home is such an emotional thing. People go through so much. I mean, after all, it's the sacrifice, the blood and sweat, the loans, the sharp gulps of uncertainty here and there that make a flat, a building, an empty space into a home. It requires a lot of planning, searching and networking. Yet, these are only a few problems that home buyers face when they are planning on buying a house. There are many other issues like the appreciation cost in the area, bad credit scores, but the biggest woes of them all are the false promises by builders and developers. Home buyers are facing significant delays and uncertainties. In Noida, Greater Noida alone, 1.65 lakh units are currently stalled, valued at a staggering 1.18 lakh crore rupees. Projects like JP, Infratech, Unitech and Amrapali, amongst others, have left countless homeowners in limbo. Today, we delve into these stories of hardships. Why do home buyers feel neglected? How effective is the RERA Act? What more can the government actually do to help? And most importantly, what recourse is available and how can we raise awareness? We want to hear all these stories from you. Call us at 0120-468-4881. We're going to continue to broadcast these numbers down below on your screen so that you can get in touch with us and share your stories and questions live on air. Let's together navigate this challenging housing landscape together. Here's to you finding your dream home. Joining us on the broadcast are going to be a couple of home buyers, but before that, we have with us Rajesh Kalia, who's the president of Main Hoon Rajdhani campaign. Rajesh Kalia, a very warm welcome to the broadcast. You know, before we get into the nitty-gritties of exactly what we're out here to, understand, what is this campaign all about? Why is it important in today's time that home buyers that are currently in limbo, on the way to office as well? I was looking at some unfinished buildings myself and I was thinking, how should I go about this discussion? And with each empty window pane, with each, unfinished slot in the building, depression sort of continued to take over. Main Hoon Rajdhani campaign, what is it about? What is it doing in terms of generating awareness for the people out there? You see, all these projects are stagnated because the policies adopted at the time of the beginning of these projects are not very well built by the government. Government have not interfered in the policies. You see, the most of the projects are stagnated because the actual money which was invested by the investors are siphoned off from the projects. The which in which they have taken the money, they have transferred the all money to the other projects or other buyback policies or assured return projects. So end buyer is suffer from this all these things because of the lacunas of the policies. All right, fair enough. We also have with us another buyer who's with us, Usain Bisht. Unitech buyer is with us. A very warm welcome on the broadcast. What are some of the challenges, Dhirenji, that you've faced yourself? Tell the viewers, share your ordeals. I mean, buying a home today and then waiting on it is not an easy job. You have to wait on so much, and whilst you're waiting, so many of your own ambitions, so many of your own dreams are put on the back burner. It seems like you'll have to unmute yourself, Dhirenji. You'll have to unmute yourself. Okay, is it fine now? Yeah, do go on. Yeah, thank you. So first of all, thank you for giving us such an opportunity. And yes, we all knows that now these Unitech, JP, all are open books, and since 14 years we are keep chasing our dreams. Like every year we thought now this will be the last attempt, and now we are able to get our home. So it started with there are every year there is a new hurdle. Sometimes it is because of Kisan Dharna, sometimes because of authority, sometimes because of
COVID, and there are so many things. So always we think now this is the last point, and this time we will get our houses. But now again, we are now at Supreme Court. I'm a Unitech buyer from 117, and we are in Supreme Court last 4 or 5 years, and still waiting for the houses. And the problem is these houses are like now 14 years back the construction has been started and then it was halted. I don't know that even if we win this battle, are these homes are still able, I mean, is there in these we will get this home in a livable condition or not? Because if something happens before the registration, even if we win this fight, and even after registration, if anything has been happened because of this poor construction which is staying there, I don't know that how we feel even if after we win this battle in next 2 3 years. So this is one challenge. And the second thing, I think that only builder is not at the we can say that only the culprit. There are so many we had fought with so many things, like when this project has been launched by any of the builders, they keep Right. putting the ads in every channels, in every means of communication. And at that point of time, authority was nowhere. It never said that we have given a plan of that just at 10% we are giving these lands to the builders and just 10% advance or 40% advance. These schemes are there, and they never told us. Now when the time of registration, they are coming up, authorities are coming, like they are saying that there bakaya hai. There are so many words they are using. Dhirenji, what are some of the challenges that you are facing yourself? Yes, sir. What are some challenges that you are facing yourself at the moment? सर ये सारे चैलेंजेस ही हैं सर, हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं इस एक घर के लिए, एंड दिस इज लाइक द वेट इज नॉट एंडिंग, वी आर स्टिल वेटिंग बिकॉज ऑफ वन और अनदर रीजन. सो ये सारे चैलेंजेस हैं कि हमें घर मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा, और मिल गया तो किस कंडीशन में मिलेगा. इतने इतने सारे मकान हैं वहाँ पे, इतने देयर आर सो मेनी फ्लैट्स आर दिस एक्सटेंशन और नोएडा एक्सटेंशन. कैसे मैनेज होने वाली हैं चीज़ें, कोई क्लियर कट नहीं है. नोबडी इज गोइंग टू आंसर. हमें हमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि इसको आगे जाके हाउ दिस थिंग्स विल बी वर्क. Absolutely, a lot of uncertainty. Of course, Pankaj Gupta, who's a JP buyer, now with us on the phone line. Pankaj ji, take us through some of your ordeals. Take us through what is your situation right now at the moment. क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि उम्मीद नहीं की जा सकती इस समय? कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई मदद करने बाहर नहीं आ रहा, कोई सामने नहीं आ रहा, हेल्पलेसनेस की सी सिचुएशन महसूस हो रही है क्या आपको भी? I thank you very much for giving me chance to speak here. Right. Situation is that मैं रोड पे आ गया हूँ. हमारे को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही हैं, हमें ही जाके हर एक दरवाजा नॉक करना है और अपना हक मांगना है. लेकिन अगर आप देखें, बिल्डर्स, ब्रोकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं. इवन बैंकर्स आल्सो वर्किंग, वो उनके साथ ही मिलके काम कर रहे हैं. उन सबको आपस में अच्छी कोलैबोरेशन है, जबकि हमारे जैसे जो होम बायर्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है. और जब भी एक नया होप लगता है कि अब मेरे को तो मेरा घर अभी 10 साल से पोजेशन डेट भी नहीं दे रहे हैं, और मैंने जेपी ग्रीन्स में बुक कराया था. जबकि जब जेपी ग्रीन्स में मैंने बुक कराया था तब जेपी ग्रीन्स का अपना सीमेंट प्लांट था, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे, और बहुत सारा ऐसा उनका सिस्टम था कि लगता था कि ये बिल्डर तो हमें धोखा नहीं देगा. आज की डेट में जेपी ग्रीन्स भी मेरे को पोजीशन डेट लिख के नहीं देता है कि ये तारीख को आपको हम हैंडओवर दे देंगे. जो मेरे भाई साहब वहाँ बोल रहे थे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप बिना प्लास्टर के हमें अब हमारा घर दे दीजिए, हम खुद ही प्लास्टर कर देंगे और हम खुद ही शिफ्ट कर लेंगे. हमारी ये सिचुएशन आ गई है. जो उन्होंने हमें बहुत सारी सुहावनी पिक्चर्स दिखाई थी या ख्वाब दिखाए थे कि आपके फ्लैट ऐसे होंगे वैसे होंगे, वो 10 साल में खत्म हो चुके हैं. अभी मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि मेरा फ्लैट का नंबर क्या है. मैं सिर्फ ये याद रहता है कि 6 तारीख को मैं ईएमआई देनी है बैंक की. हर 6 तारीख को ईएमआई जरूर देता हूँ. कितनी ईएमआई देते हैं सर? मैं उससे कितनी ईएमआई देते हैं? 68,000 रुपीज. 68,000 रुपीज पर मंथ आप अभी तक दे रहे हैं? हाँ, और मेरे अभी ईएमआई के सिर्फ 56 महीने बाकी हैं.
उसके बाद ईएमआई खत्म हो जाएगी, और उसके बाद बैंक भी टाटा बोल देगा, और बिल्डर ने नहीं दिया तो भी टाटा पाएगा। क्या क्या रिकोर्स और रेमेडी के क्या क्या ऑप्शंस पंकज जी आपने अभी तक इस्तेमाल किए हैं? क्या क्या कौन से इंस्टीट्यूशंस का जाके आपने दरवाजा खटखटाया अब तक? हमने सब जगह दरवाजा खटकाया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, हमने पुलिस में जाके रिपोर्ट भी लिखवाना चाहिए, हम एमपी एमएलए उन सबसे मिले, दिल्ली में जाके मिले। इवन What was that conversation like? What was that conversation like? Your meetings with the member of parliament, your meeting with the MLAs, उसमें से क्या निकल कर आया? सबके बड़े बड़े उस समय बहुत सारे हमारे को सपोर्टिंग वो मिलते थे कि हम कुछ करेंगे आपके लिए, ये करेंगे वो करेंगे। अगर हम अपोजिशन पार्टी से मिलते थे तो वो कहते थे अभी तो हमारी पार्टी नहीं, हमारी सरकार नहीं है, तो हम आपका अभी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, जैसे हम आएंगे तब करेंगे। तो अखिलेश जी की सरकार गई, बीजेपी की आई, 10 साल होने वाले हैं, अब हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स, बिल्डर्स, बैंकर्स, एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर। All right. और Okay. हमारे को किल कर रहे हैं, होम बायर्स को किल कर रहे हैं, All right. उनको मार रहे हैं बस। You know, that's a pertinent point. I'm going to go across to Rajesh Kalia, who's the president of Main Hoon Rajdhani campaign, an advocate himself. Kalia ji, you heard these two home buyers. I don't know if you're going through the same ordeal yourself or not, but listen into what they have to say. पंकज जी बता रहे हैं कि किस तरह वो सड़क पर आ गए हैं. He's still having to pay 68,000 rupees per month. Doesn't even know if after the EMIs he's going to get ownership of the house or not. Dhirenji is waiting on his house for the last 14 years. All legal institutions and their doors have been knocked on. Still no reprieve. Absolutely no relief. ऐसे में क्या करे आदमी? This is the position of every home buyer who is the end buyer of the project, जिन्होंने अपना घर बनाने के लिए पैसा दिया। You see my project is revived from the High Court in 2019. The new promoter have taken Bhumi Pujan and everything again from that place, but now still the project is stagnant because of some political influence. Because some political influence is there, then the project is stagnated. We have met the CM also, we have met the MLAs, we have met the department, town and planning department, but they said we are doing what is the best. So home buyer is suffering like Mr. Gupta. You see, everybody is paying installment and rent also. I have invested all the money in this project. I am the end user. End user is sufferer. Main sufferer is end user. Right, absolutely. But मेरा वही तो सवाल है कि end user, if he is the sufferer, if they are the sufferer, then what can be done to help them out? सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं मिस्टर बिष्ट, पंकज जी बता रहे हैं कि सब लीगल इंस्टीट्यूशंस ट्राई आउट कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? कानून अपने हाथों में तो नहीं लिया जा सकता। No, this is not possible कि कानून अपने हाथ में लिया जाएगा, but these are the government intervene should required in these cases. Most of the projects are in Haryana or UP, in the North India. So the state government have to involve in this project. They need to be required a monitoring committee for that. They have to check that what should be the project's report, funding, everything should be checked by the authorities. Then it will be controlled. Otherwise, everything going on. That's all. All right. Mr. Bisht, Greater Noida Authority had hired a consultant earlier in the year today, in 2023, to assess the status of all the incomplete projects. क्या आपका प्रोजेक्ट उस लिस्ट में आता है, उस लिस्ट में शामिल है? Do you have any idea of what this assessment officer ended up doing in the Greater Noida Authority area? So 117 नोएडा में आता है, इसलिए एक्सटेंशन का पार्ट तो नहीं होगा ये, बट वी आर हमने रेरा के दरवाजे भी खटखटाए हैं, हमने NCLT, NCDRC और अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो
लगभग सभी जगह पे हम गए हैं। रेरा में हमें ये लगा कि जजमेंट हमें फिर भी मिल जाए, लेकिन हमें इट्स लाइक अ जाइंट विदाउट अ टूथ। अब वो एग्जीक्यूशन में बहुत मुश्किल है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, नोबडी इज टेकिंग, कोई भी डेवलपर उसको सीरियस नहीं लेता है। And which 6 is why महीने 1 we've साल been में अगर constantly आपको asking this question as well, Mr. Bish. What is the RERA's utility? And are you, as a benefactor, a benefactor of the RERA Act, are you able to derive that utility from the Act? No, sir. I didn't get any. If you say as a personally, I didn't get any benefit. I had fought there for one of my flat, and like after fighting for 6 or 8 months, they said me that you filed this case 15 days before, and that is very surprising for me, because I gave them all the things, like the project was not started. This is not Unitech, this is some other project. So it has not been started in last 4 years, and then there is a 6 months extension is there. So I went the court like after completing of that 4 years and 6 months. But they said that you are still coming 15 days back. So I said, sir, जो चीज अभी 2 से सेकंड फ्लोर तक गई है, एंड दिस केस इज ऑलरेडी रनिंग फ्रॉम लास्ट 6 months, और इसके बाद आप मेरे को इस केस को इस वजह से आप वापस कर रहे हो कि आपने से 15 दिन पहले ही भर दिया था केस को, और अब आपको इलाहाबाद जाना है इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो फॉर लाइक वी आर सर्विस मैन सर, हमारे लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे कोर्ट्स में ये तो फिर भी अच्छा है कि हम एनसीआर में हैं, तो फिर भी कुछ कोर्ट्स हमारे पास हैं कि हम जा सकते हैं, बट चारों तरफ नहीं भाग सकते थे। सो रेरा फॉर मी इट्स नॉट अ any option. If somebody is looking for a justice, RERA is not. I don't think that he will get that justice, because Well, so अगर apart आपको from मिल भी this जाता है curious वो, case of RERA, justice, Mr. तो Bish, आपको is there any other legal remedy that you have incorporated? Is there any other there are legal a remedy that couple you have of buyers incorporated, with sir? me. Yeah, sir, there are a couple of buyers who also fought with me, and some of them have get the justice, like they get the verdicts, but after the verdicts execution was not there. So we are still running for the executions. I don't know that if RERA can help, how much RERA can help other people's, but for me it's good for nothing. Absolutely, and it seems like this is just the tip of the iceberg. Pankaj Gupta, who's a JP buyer, continues to be with us on the broadcast. Pankaj, a really pertinent point that you made, that you're still paying that huge plenty sum of money every month. Now, when we're talking about buying homes, and how conducive is the banking system, is the loan taking system from the market, how conducive is that for home buyers? Or is that more so like a trap, because you're already alleging that all these various factors are at play, the bureaucracy and the banking systems, they're in cahoots over here? Yes. So let me put 2 points. One, bankers are always sitting along with builders when selling the home, and they give very beautiful schemes and discounts so that an individual is encouraged to buy the home, and then they try to suck 90% of payments at first go, and at that moment we as a home buyer do not understand the intention behind this. After that, what is happening, if you see JP case, it has gone to NCLT. After first verdict or second verdict, the major banker who has given home loan through buyers, he is putting so many points to stop the case, and he's pulling the case again and again, and it is going for next hearing and getting delayed, and then their banker is no worried about buyers, because he is getting his money, he is getting his interest. Banker, you see, Axis Bank, they have taken one whole building from JP. If you pass by JP office in Noida, you see one big building named Axis Bank, and they have taken it from builder. We have not got that kind of any infrastructure. If you go to ICICI Bank, you dig in JP's system, you will find that there are hundreds of flats which are in the name of ICICI Bank. JP cannot sell them without permission from bank.
So this kind of, they have collaboration along with bankers and builders. So now at this point of time, the law has to be changed drastically. What more someone do you has think the given- government has to come in and do? Because it seems like there is lack of authority in your ordeal over here, Pankajji. Yes. What more can the government do? What are you expecting the government to come in and do? See, point is that it is very difficult for individual to answer that कि government को क्या करना चाहिए. Government को at present ये तो करना चाहिए कि if person has given money 10 years back and he is not getting home, the money should be returned with interest. They are not ready to do that because there are some other laws, something which is not allowing to get money back. So there is something has to happen in favor of home buyers so that they come back to their normal life. This is not normal life. We have become slaves. We have become slaves of banks, to our workplaces, because we know we have to pay EMI, we have to live on rent, and then we have to work hard to earn that much money to feed these two major amounts. No, you're absolutely right, and I can understand, the normal pain in your voice as well, the sacrifices that you're making. Like in my show intro, I was already saying, एक मकान को घर बनाने के लिए कितना खून पसीना लगता है, ये उसी होम ओनर से पूछा जाए जो अभी तक अपने मकान का इंतजार कर रहा है. We have Mr. Kalia with us on the broadcast, president of the मैं हूँ राजधानी campaign, and Mr. Kalia, can you help the viewers understand if there are other campaigns like your campaign, if there are other specific initiatives, if there are other programs that are in place to raise awareness amongst the home buyers about how not to fall in this particular trap? You see, every project have own problems. Means JP have own, my project have own problem. So it required some restrictions from the initial stage to the builders, because in housing project everybody has invested for a single home, not for lot of the project are stagnated because of money siphon of to the buyback customers, to the assured return customer. So these policies should be taken on the missed. इनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा अगर किसी को फ्लैट देना है, क्योंकि बायर उतना पैसा देने के लिए तैयार है जितना आपने मांगा है as per your demand. Then why their money to be shifted to the other projects? Why? So these restrictions should be imposed on the builders and promoters. All right. Mr. Dhiren, how about take you as a case study over here. What are the recourses that you have explored, and what is your future game plan like? Like you said, let me reiterate for the viewers, you've been waiting on this home for the last 14 years. It's a Unitech project, isn't it? Tell the viewers about what your recourse has been for the longest time, and what do you seek to do in the future. So, sir, before going into this question, let me see this as a broader picture. Like there are two problems what we are all facing. One, either we are waiting for our houses, that is construction issue, and second one, if construction has been done, the registries are not happening. So for constructions, yes, we are looking for the helps from authorities, from government, basically for the add-ons. अगर हम लोग as a serviceman, we are giving our taxes and all these things on time, and we are actually, अगर आप ट्राई पार्टी एग्रीमेंट देखें तो एक बायर, हम बायर्स के अलावा बाकी दो लोग भी होते हैं उसमें, एक डेवलपर एंड बैंक, बट दीज टू पीपल आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स वेरी सिंसियरली. अगर बैंक किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा तभी देता है जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे बहुत सारे प्लान है CLP, आप लोगों को इसका काफ़ी आइडिया होगा,
बट द थिंग इज सीएलपी में जब एक बिल्डिंग इस एक स्तर पे पहुंच गई उसके बाद ही पैसा देना है, तो ज्यादातर पैसा जो है कंस्ट्रक्शन तक ही निकल जाता है। और कहीं कहीं पे बैंक्स इसको वापस चेक भी नहीं करता है, अथॉरिटीज तो बिल्कुल ही चेक नहीं करती हैं। अथॉरिटीज का क्या काम है बहुत क्लियर नहीं है हम लोगों को अगर देखा जाए तो। आपको एक शहर को डेवलप करना है, आपने प्राइवेट बिल्डर क्यों लेके आए? आप प्राइवेट बिल्डर लाए, ठीक है, आपने उन्हें चेक क्यों नहीं किया? आपने उन्हें जमीनें दे दी तो हमें क्यों नहीं बताया? जब हम घर खरीद रहे हैं, वो चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आप हमें क्यों नहीं बता रहे हो कि इनके पैसे पूरे नहीं आए और हम आखिरी में आप लोगों की रजिस्ट्री नहीं होने देंगे अगर इन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए? आप वो पैसा डायरेक्ट हमसे क्यों नहीं ले लेते थे? आप बोलते कि हमने आपको 10% दिया, जो आप घर बेचोगे उसका पैसा जो अथॉरिटी का है वो आप कस्टमर हमें डायरेक्ट देगा। तो हम उनको, हमें तो पैसा देना था, हम डायरेक्ट देते। बैंक ने अपना काम क्यों टाइम से नहीं किया? बैंक ने क्यों चेक नहीं किया कि ठीक है आप हमने आप देखा है आप लोगों का घर इतना बन गया है और अब आपका ये हम पैसा आगे दे रहे हैं? या फिर वो हमें पहले ही बता देते हैं सर ये सारा पैसा तो कंस्ट्रक्शन में ही चला जाएगा, आपको ये पैसा 50% वाले ही प्लान में जाना चाहिए, 100% में नहीं जाना चाहिए जब तक आपको घर ना मिले, ताकि आप लोगों को भी आपका घर मिले और हम लोगों को भी इससे फायदा मिले। बट दे सेड कि ठीक है आप ले जाओ सारा पैसा, पहले 3 महीने में ले जाओ, पहले 6 महीने में ले जाओ, देन वेट, अब हमारा कोई मतलब नहीं है। दे आर जस्ट फोकसिंग द सेकेंड पार्ट कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बिल्डर तो अगेन बिल्डर तो आए ही बिजनेसमैन है, तो वो तो पैसे को डबल करने ही आया है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी अपना काम सही से नहीं किया। अब कहानी जहाँ फंसी हुई है वहाँ पे पैसा जो है, अगर थोड़ा सा रेवेन्यू एड ऑन्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिन प्रोजेक्ट्स के पास पैसा नहीं है तो वो कंप्लीट हो सकते हैं। और अथॉरिटी इसमें दिक्कत ना करे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन उन्हें कर देनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा है तो वो अपने सर्कल रेट्स थोड़े बढ़ाएं, वो उस एरिया को डेवलप करें, और जो पैसा उन्हें बिल्डर से लेना है वो रजिस्ट्री थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हमें चलेगा। मतलब अगर हमें 1 लाख रजिस्ट्री के देने हैं तो हम 1.25 लाख दे देंगे। दैट इज वो जो 25,000 है आप वहां पे कंपनसेट कर ले, और उसके बदले में आप लोग वहां की चीजें बना के दें हमें। गलती है नोएडा अथॉरिटी की भी, दे शुड नॉट बी रिजिड इन दिस वे कि हम पहले तो सो रखे थे और लास्ट मोमेंट पे हमें सब कुछ सही चाहिए। तो मेरे को ये लगता है सर कि अगर इस तरह से कुछ काम हो कि कुछ पैसा मिल जाए घर बनने के लिए, और जो एरियाज हैं, देखिए एफएआर तो किसी भी टाइम पे बढ़ाई है इन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। मैंने देखा है 14 ईयर्स में कि एफएआर 2 से लेके 3.5 तक पहुंची है नोएडा की। सो नोएडा की लैंड वही है, मतलब सेक्टर्स वही हैं, एफएआर बढ़ाई दी है इन्होंने। तो आप देखिए कि आप किस तरह से उनको एक आध टावर एक्स्ट्रा या फिर कोई मॉल के लिए या कोई कुछ और जमीन देने के बाद आप कुछ वो पैसा वहां से उठा सकें और यहाँ पे लगा सकें। आप देखिए कि जो डेवलपर्स काम करना चाहते हैं उनकी भी कुछ हेल्प करिए। हमें एंड में हम लोगों को घर मिलने चाहिए। आप देखिए उसमें और क्या कर सकते हैं, आपको रेवेन्यू आपका जो अटका हुआ उसको आप निकालने के दूसरे तरीके ढूंढिए। इट्स नॉट कि आप उस पर अटक गए, नहीं हमें तो डेवलपर्स ही चाहिए और उसके पास पैसे है नहीं और बैंक अपना साइड हो चुका है, हम लोग तो बिल्कुल फंस गए ना, हम किसके पास जाएं? यही केस हम अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी लेके जाते हैं, वहां पे भी यही गोल चक्कर है कि कौन करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जेब से तो पैसा नहीं लगाएगी, या जज आके खुद तो ईंट लगाएंगे नहीं वहां पे। No, you're absolutely right, and it's great that at the same time, Mr. Bisht, you're coming up with the right kind of remedies also. It's not like you're only telling problems, you're also bringing solutions to the table as well. I'm going to take the same question to, Pankaj Gupta. Pankaj ji, would you like to add to this list of remedies that Mr. Bisht has already, put forth? Some really constructive opinions over there. And also, Dhiren ji also spoke a little bit about the tripartite agreements and, how these builders sort of attract all these home buyers by saying, we'll pay your EMIs for the next 3 years, you pay only the EMIs after you get possession of the flat, and not working diligently as a developer and as a banker party in that particular contract, in a scenario of a tripartite contract. The Supreme Court has come out and said that these tripartite contracts are not recommended. Why do people still fall in these traps? And also, whilst you're at it, do add to the list of remedies that Mr. Bisht has put forth. See, tri-party agreement are just basic requirement when we apply for home loan. So that's why we fall into that trap. And we home buyers are not legal expert, and it was never thought that we should go to lawyer first, understand this agreement, and argue with banker or builder कि हम ये साइन नहीं करेंगे। वो तो उनका एक जरूरी डॉक्यूमेंट था कि ये साइन करिए और आप आगे बढ़िए। That's why tri-party has been developed. Now bankers have already washed their hands. वो तो कहते हैं कि आपने लोन अपने नाम पे लिया है, you have to repay it.
तो बैंकर्स, अभी ये सुझाव आना चाहिए कि बैंकर्स को भी पार्टी बना के एटलीस्ट ईएमआई को पॉज कराया जाए जिनका घर नहीं मिला है, और कुछ और रेमेडी निकाली जाए जिससे बैंकर्स पे भी लोड आए, नॉट ओनली बिल्डर पे। तभी बैंकर का इन्वॉल्वमेंट आएगा और थोड़ा पुश भी मिलेगा बिल्डर को कि काम सही करने के लिए। अदरवाइज बिल्डर और बैंकर अलग से मीटिंग करके अपना मतलब निकाल लेते हैं और होम बायर सफर करता रहता है। जैसे उन्होंने रजिस्ट्री की बात कही और चीजें कही, मैंने बहुत सारी चिट्ठियां पीएमओ को लिखी। Almost 6 months before, I got a reply from one of senior person from Noida authority that they are watching construction of JP, but it is just on papers. उसको थोड़ा रियलिटी में भी लाना पड़ेगा। उन गवर्नमेंट को अगर मतलब कि अथॉरिटी को अगर ये रियली में सही में करना है हेल्प, तो उनको एक पर्सन में भी डेली सिटिंग के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। आप जो प्रोजेक्ट पे जाके बैठो, वीकली जाके बैठो और वीकली अपडेट करो प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, तभी ये प्रोजेक्ट कंट्रोल में आएंगे। नहीं तो महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जब वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो वो नया मुद्दा लेके आ जाएंगे कि इसके कारण ये चीज डिले हो गई। तो करते करते हर 3 महीने, 6 महीने में वो डिले करते जाएंगे। तो उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। In terms of demonstration, in terms of protest, Mr. Pankaj, is there any protest or demonstration that you conducted? Yes, I have or been held? part of many protests and demonstrations, and I have met with Rahul Gandhi face to face in one of the meetings. But what happened? Rahul Gandhi called media and showcased that he met home buyers. उस दिन के बाद आज तक राहुल गांधी ने कभी भी हमारी टीम में से किसी को भी फोन नहीं करवाया कि भाई साहब आपका घर मिला है कि नहीं मिला है। उस दिन को भी अभी 6 साल हो गए होंगे या 7 साल हो गए। तो प्रोटेस्ट का कहने का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट हम सब सिर्फ सड़क पे जाके अपना खून एक दिन के लिए जला देते हैं कि हमने प्रोटेस्ट कर दिया, उसका कोई सही मायने आ नहीं रहा है। यू अंडरस्टैंड? मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो प्रोटेस्ट खाली दिखावे के लिए हो रहा है। कोई और उस प्रोटेस्ट का बेनिफिट लेके जाता है प्रेशर बनाने के लिए पॉलिटिकल। तो हमारे होम बायर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि हमने आज प्रोटेस्ट किया, कल किया, परसों किया, अथॉरिटीज सब लोग आके बैठे, यार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ करो इनके लिए। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। Well, absolutely. I can understand that, with no response from the right kind of authorities, it must feel like nobody is trying to listen to us, nobody is trying to understand us, but something's better than nothing, and something's got to give. Of course, easier said than done for me sitting here in the studio, whilst you home buyers are the actual people who are having to go through this ordeal. Mr. Kalia, पंकज जी ने एक बहुत pertinent बात रखी कि हम सब legal expert तो हैं नहीं. So when we're entering these tripartite agreements, which seems like is a bare necessity when you're taking a loan from the bank, you don't really understand or read the contract per se. तो क्या ये बात मान लेनी चाहिए? Is it safe to assume that today if you're going out there to buy a home, you must consult a lawyer, you must have some sort of legal expertise on your corner? No, they have their set formula for that. They have their set conditions and terms and conditions set in the builder buyer agreement, because they are banks are giving a loan to the buyer. They have their own formalities and everything. So they have their complete set of papers are there. So you have to sign if you want a loan. If you want a loan against your property, you have to sign that tripartite agreement. But I am agree with Mr. Gupta and Mr. Bisht that government should do one thing for the remedies. Sometimes जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें नया प्रमोटर आ गया है, पर now he is ready for the doing the project work, but the situation is stuck there. The government want the old IDC, IFC, whatever the government charges are there. They want with penalties, with the interest. So
he is asking that why I am going to pay these penalties, because it is the fault of the last promoter. So the situation is same there. The project is still stagnated for the 2 years. Even the high court have revived the plan. So these are the flaws. These are the flaws required to be omitted, required to be. All right. And Mr. Dhiren, what's your opinion? Do you think when you plan on buying a home, or you advise to somebody who's trying to look for a home, because it is a delicate process, who better to answer this than you? क्या आप एक लॉयर और लीगल एक्सपर्ट को का एडवाइस देंगे किसी और को? इट शुड बी, देखिए ये एक ऐसी चीज नहीं है दैट ओनली वन बायर नीड्स दिस. इट्स अ प्रोसेस. देयर शुड बी अथॉरिटी फॉर दिस. इफ रेरा इज देयर, रेरा के पास ये होना चाहिए कि ही सेट द गाइडलाइंस, दैट रेरा सेट द गाइडलाइंस फॉर हाउ दिस tri-party agreement should work, and if it is fails, then how banks will also compensate. So there is no compensation from bank sides. अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो बैंक की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं है. दे आर सेइंग कि अगर फेल होता है तो हम आपका घर रख लेंगे, अगर आपने लोन नहीं दिया तो हम आपका घर रख लेंगे, हम आपकी सिविल गिरा देंगे. दैट मीन्स कि हमें तो पे करना ही करना है उनको, घर मिले या ना मिले. बिल्डर को चलो ठीक है, अब केस हो रहा है, उसके बाद उसे जेल भिजवा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. लेकिन जो पेनल्टी हमें चाहिए, देखिए हमारी उम्र भी गई है, हमारा टाइम भी गया है, हमारा पैसा भी गया है. सिर्फ पैसे की बात नहीं है. एक काफी, जैसे मैंने जब घर लिया था तो मेरा मानना था कि मैं शादी करूंगा यहाँ पे इस घर में, और अब मेरे बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं. तो इट्स लाइक कि हमारा जो उम्र गया है उसका कोई कंपनसेशन नहीं है ना. तो ये जो चीजें चल रही हैं आज भी, क्या होता है कि एक फेलियर होता है, अगर कोई एक बिल्डर फेल हो जाता है तो वो अपने ही बिल्डर्स की एक लॉबी है, उस लॉबी में से कोई अपना ही बंदा ले आता है कि ठीक है अब तुम इसे बनाना, और जो जितने भी मेरे पास लोगों ने केस करे वो सब खत्म हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि मैं तो अब हट चुका हूं इसमें से. ठीक है, तो ये एक तंत्र है. इसको आप कैसे बाहर निकलोगे? अनटिल एंड अनलेस आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ हमें ही बलि का बकरा बनाने के लिए ना बनाए गए हों. उसमें ये रहे कि अगर ये फेल होता है तो आप इनको एक की जगह 2 घर दोगे. आई एम जस्ट सेइंग कि एग्जांपल्स क्या है. अगर डेवलपर को बोला जाए कि अगर आपने इस टाइम फ्रेम में नहीं दिया तो फिर आप इनको एक की जगह 2 घर दोगे. बैंक को भी बोला जाए अगर आपने अपना काम सही से नहीं किया तो जो इंटरेस्ट आप इनसे चार्ज कर रहे हो उसका डबल इंटरेस्ट आपको वापस देना पड़ेगा जब भी ये लोग मांगेंगे. तो आप लोगों को भी ये काम करना है. जैसे हमारी सिविल गिरती है वैसे बैंकों का भी होना चाहिए कि इस बैंक से लोन लेने के बाद ऐसा ऐसा हुआ. सो जब ये सब लोग अपना काम सही से करेंगे तो हमें हमारे घर मिल जाएंगे. अगर इनमें से एक भी लोग सही, मतलब अगर एक भी पार्टी, जैसे हम लोग पूरा, हमें घर नहीं मिले हैं बट हमने कभी अपनी ईएमआईस नहीं ब्लॉक करी, हम अपनी ईएमआईस आज भी दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ठीक है, हम गवर्नमेंट को, हम लॉ को मानने वाले लोग हैं, हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं. लेकिन बाकी लोग नहीं मानते हैं इसको, बाकी लोग इसे ऊपर मानते हैं अपने से. और क्या उसको एक ही तरीका है कि आपका जो स्ट्रक्चर हो वो इतना मजबूत हो कि उसको कोई तोड़ ही ना सके. उसको तोड़ने के लिए सोचे भी ना कोई कि भैया इसमें तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा सख्त रूल्स हैं, हम इसे नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक रेरा, आपने रेरा दे दिया और लोगों ने और पैसा लगा दिया ये सोच के कि चलो रेरा आ गया, बट रेरा का आपने सिर्फ मार्केटिंग इतनी कर दी, बट एक्चुअली में उसके कितने केसेस और एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं वो सबको एक्चुअली में पता है कि वर्डिक्ट के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है. जो वर्डिक्ट दे दिया आपने, ठीक है बहुत बढ़िया, आपने वर्डिक्ट दे दिया, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? वो there is no execution after the verdict. Of course, people are looking for compensation for things that can't be quantified. These are emotions, these are sacrifices. But Mr. Bisht, is there any success story that you would also like to share with the viewers? मैं जानता हूँ सक्सेस रेट बहुत कम होगा, लेकिन सक्सेस की कुछ स्टोरीज ताकि लोगों को उम्मीद रखने में तकलीफ ना हो. आई डोंट थिंक दैट मेरे पास कोई है, क्योंकि मेरा यूनिटेक मैं अभी 117 में 14 ईयर्स से वेट कर रहा हूँ. बट आई होप कि कुछ लोगों के पास सक्सेस स्टोरीज हैं और शायद कोई और बता पाए. मेरे पास इस समय ऐसी कोई स्टोरीज नहीं है जहां मैं बोलूं कि बायर को घर मिला और वो उसके बाद काफी खुश है. All right, that does go a long way. That there are no success stories that you can share. Pankaj Gupta with us, who's a JP home, buyer, still waiting on that flat. Pankaj Gupta ji, there is a lot of monetary problem. We know there is a lot of societal problem, but of course there's a huge, a huge and whole aspect of
mental health as well, mental deterioration. Would you like to throw some light on that as well? Yes, I would say that I have stopped thinking of going to builders again and again or going for anything. Is that for your own mental health, for the better Yes, of your own mental yes, health? yes, because I when I was going on regular basis was creating a lot of stress. So I thought let's stop this and do not follow builder more. And since I was legally bounded to pay bank EMI, I have to do. I'm doing that. Okay, all right. You know what? I'm going to go It is across very the board stressful. one last It time, is, yeah. asking all the panelists about what message would they like to give to all the home buyers out there, because it seems like you are the people who've been through this mental harassment. You're the ones who are still toiling hard, going door to door, trying to understand what legal recourse can be undertaken. So, Pankaj Gupta ji, what's your message to all the home buyers, all the anxious home buyers that might be watching, all the potential future home buyers that might be watching this show? For the system, they have to change the law. And for buyers, they have to go for ready to move in instead of looking for a home which is under construction where you do not trust or you do not have any firm delivery dates. And for government and all, they have to change the law. They have to make it very restricted or very strict. Otherwise, one generation has lost so much thing, and our kids will become poorer instead of, you understand what I'm trying to say. I do. And I hope, all the people that are watching the show, maybe the message can transcend beyond the boundaries of home buyers, and really somebody from the government officials does act on this as well. Rajesh Kalia ji, over to you. Very briefly, your message as a word of awareness, because you yourself are a president of Main Hu Rajdhani campaign. Mr. Gupta said very well that you move to ready to move flats, because now the confidence are very much stuck by the people's builders. So it is good you move to the ready to move flats. Not enter in any lucrative plan from the builders. This is the only message. All right, Mr. Bisht, over to you. Ready to move flats, some really good remedies, constructive remedies that you put forth for all the viewers, but your message at large to everybody is that watching this right now. Yes, sir. This is the same message I also want to convey, that please go with the ready to move flats, and not only ready to move, but also look for the registries are there. So जिनकी रजिस्ट्री हो रही है सिर्फ उन्हीं घरों में जाएं. आज ज़्यादातर हम बायर्स मिडिल क्लास सिर्फ इस वजह से CLP में जाते हैं कि 10 लाख 5 लाख सस्ता मिल रहा है घर, बट दैट इन अ लॉन्ग टर्म आपका उतना रेंट बच जाएगा आपको, क्योंकि रेंट भी देना है तो रेंट बच जाएगा आपका 5 साल का. आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको एक मेंटल पीस रहेगा, और आपके लिए एक रजिस्ट्री वाला घर हमेशा बेटर है इन सब चीज़ों से बचने के लिए. ना ही आप किसी डेवलपर के पास जाएंगे, ना ही आपको कोई बैंक परेशान करेगा, और आपके पास अपना एक घर होगा जिसमें आप शांति से रह सकेंगे. ये सबसे बेस्ट है कि आप रजिस्ट्री वाले घर ही देखें. नोएडा, एटलीस्ट नोएडा और NCR में तो यही करिए, और बाकी जगहों का नहीं पता मेरे को. अगर कहीं पे कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं तो दैट्स इट, बट नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए बेस्ट ये है कि आपको सिर्फ घर जो रजिस्ट्री वाले घर हैं उन्हीं में जाएं. All right. It seems like ready to home flats, ready to move in flats is the way to go, but make sure that registry is there. Do take in legal opinion, of course, and there are unique ways of finding out compensation as well. Try to bring solutions to the table as well. It seems like we're going to continue to have to talk about this, because it's important, ladies and gentlemen, to continue to talk about the problems, the ordeals of who has stolen your dream home, and why is nobody talking about it. It's important that people continue to talk about it. Like Mr. Pankaj Gupta was saying, लोगों को लगता है उन्होंने अपना खून जला लिया बाहर जाके एक दिन के protest में, but something is better than nothing, and some things got
to give. On that note, Pankaj Gupta, many thanks for joining with us. Mr. Bisht, many thanks for joining with us. Mr. Kalia, many thanks for joining with us on this broadcast. Well, who stole your dream home? We're going to continue to probe these particular aspects. Meanwhile, that's all the time we have for you on this special News9 series called Who Stole Your Home, brought to you live from our studio here in the national capital, styled by none other than Paul Mall. Lots more coming right on the other side. Don't go anywhere.